It is impossible to talk of Ahmedabad city without thinking of heat. ગરમી તો બહુ જ લાગે છે પણ શું કરીએ 24 કલાક પંખો ચાલુ હોય તો એ ગરમી એટલી લાગે છે ઘરમાં તો क्योंकि पतरे वाला मकान है ना तो अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। हीट इंश्योरेंस के बारे में पता है? हाँ, हीट इंश्योरेंस के बारे में पता है, हमने कराया भी है। A decadal analysis found out that more than 95% of the city is under heat stress. The heat stress is so severe that back in 2010, over 1,300 people died from a heat wave. Following this tragic event, Ahmedabad introduced a heat action plan, a first for any Indian city. But adapting to this severe heat is not new to Ahmedabad. In fact, Ahmedabad is the first UNESCO World Heritage City known for its historic heat adaptive houses set in its port or streets across the walled city. However, the largest city of Gujarat is now becoming one of the worst heat stressed cities of India. So how far are we with these heat mitigation or adaptation measures? Let us explore in this episode of Urban Heatscapes. Ahmedabad has a hot and semi-arid climate according to the climate zones of India, which means that the temperatures can peak by 48 degrees Celsius in the month of May. Ahmedabad has seen rapid urbanization in recent years. Between 1990 and 2019, the built-up area in the city has expanded by 130%. We saw that wherever the temperatures were breaching a 45 degrees Celsius mark, those places were termed as the heat centers. Now when we combine all of these maps and see that which are the locations wherein recurrently these temperatures are breaching in definition like 6 or more years, those places were termed as heat stressed areas. The scary part is that our analysis shows that more than 95% of the city is under heat stress. As of 2025, an estimated 9 million people are living in Ahmedabad. The erstwhile capital of Gujarat was popularly dubbed as the Manchester of the East due to its rich history of textile mills. Today, this landscape is dominated by the handicraft industry, which primarily employs informal women artisans. However, their trade and business are severely impacted by the rising urban heat in Ahmedabad. To understand how they work, we visited Odhav, located in the eastern part of the city, an area subject to heat stress and higher land surface temperatures. मैं यूपी की जौनपुर ज़िले से हूँ और यहाँ पे मैं 2008 में यहाँ पे आई हुई हूँ मार्च में। आज की तारीख में आप कितना कमा लेते हैं? सिलाई का केवल मेरा दिन का तो 400 का हो जाता है। अगर बराबर एक दिन बैठती हूँ तो 50-60 नग डेली का निकल जाता है। जितना माल मिलता भाई हिसाब से होता है 7,000, 8,000, 9,000 जैसा हो जाए। और ये घर से ही करते कहीं जाते भी हैं? नहीं, घर पे ही करते। लगती है गर्मी तो लगती है ना, इधर पंखा भी है नहीं तो गर्मी तो लगती है। क्या करते हो तो? अब क्या ऐसे ही सीते हैं, ज़्यादा लगती तो थोड़ा बाहर खड़े जाते हैं, अंदर जाते हैं, ऐसा है। तो पंखा लगाने का सोचा नहीं था? सोचते हैं मजबूरी है तो आता नहीं है पंखा, इसके लिए नहीं आ पाता है। Odhav, wherein majority of the settlements comes under compact low-rise category. Majority of the roof materials are metal, asbestos or tin sheets that actually captures the heat, retains it and also increases the temperatures indoors. क्योंकि पतरे वाला मकान है ना तो गर्मी ज़्यादा है और मेन रोड पे है, सूर्य का प्रकाश पूरा खिड़की पे, दरवाजे मतलब पूरा वाल जो है दीवार पे उस पे आता है तो अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और सोलर रिफ्लेक्टिव वाइट पेंट है, ये लगवाओ तो आपके घर में ठंडक रहता है। ये सब तो खर्चा नहीं है खर्चा, लेकिन जैसे थोड़ा एक बार कर देंगे तो थोड़ा दिन तो शांति रहेगी ना, बार बार लाइट बिल आने से अच्छा तो है ना। सोलर रिफ्लेक्टिव वाइट पेंट बहुत ही अफोर्डेबल सॉल्यूशन हमारे लिए है।
तो फिर एएमसी ने उस टाइम ये सोचा था कि हम इसको एज अ सॉल्यूशन हीट एक्शन प्लान में इनकॉर्पोरेट कर दिए। There is another popular heat adaptation measure which is being experimented with in different metropolises. ટ્રેનિંગમાં એવું હોય છે કે અમુક આપણે પૈસા રાઉન્ડ ટુ રાઉન્ડ બહેનોને આપીએ છીએ 8,000 સમથિંગ, કે જેનાથી બહેનો આપણી આ જે ગેમ છે એમાં ટેકનોલોજી હોય છે, ઉનાળાની ટેકનોલોજી હોય છે, વર્ષા ઋતુની ટેકનોલોજી હોય છે. ઉનાળાની ટેકનોલોજીમાં આપણે જે રોશનદાન હોય છે, પછી હરીછત જે આપણે કહીએ છીએ, પછી મોડરૂપ જે બનાવી દઈએ છીએ એ રીતની ઉનાળાની ટેકનોલોજી હોય છે. સેમ એ રીતે વર્ષા ઋતુની બી ટેકનોલોજી હોય છે, જેમાં આપણે પાળી બનાવી દઈએ છીએ, છતમાંથી જે પાણી થાય છે એની પાળી હોય છે, છતની મરમ્મત કરી આપીએ છીએ, એ બધી ટેકનોલોજી હોય છે. તો એ જે પૈસા હોય છે એનાથી ટેકનોલોજી ખરીદી શકે છે. એની સિવાય આપણે સોની પણ રાખ્યા હોય છે અને એમાં સોનાના દાગીના, ચાંદીના દાગીના હોય છે કે જે પૈસાથી બહેનો દાગીના પણ ખરીદી શકે છે. અને એની સિવાય આપણે વીમો પણ રાખીએ છીએ. તો વીમો હોય કે જેથી કરીને ગરમી વધારે પડે તો બહેનોને કંઈ નુકસાન થાય તો એના સામે એમને નાનું મોટું વળતર મળી શકે, એના માટે વીમો રાખીએ છીએ. वी ट्राई टू नो अबाउट देयर विलिंगनेस कि अगर ऐसा कोई इंश्योरेंस आता है तो क्या वो लेना पसंद करेंगे। और हमारा जो इंश्योरेंस है वो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस है, तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में ऐसा जो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर सिटी का टेम्परेचर 2 कंसेक्यूटिव डेज 2 दिन के लिए अगर टेम्परेचर वो पहुंचता है जो हमने तय किया था, तो बहनों के अकाउंट में उनको पे आउट सीधा मिल जाएगा। तो अहमदाबाद में लोअर लेवल का जो टेम्परेचर था तो 43.7 डिग्री सेल्सियस हमने थ्रेशोल्ड रखा था, एंड हायर वाला जो था वो 44.1 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया गया था। 43.7 डिग्री हुआ तो 750 रुपीज़ उनको मिला। अगर 44.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 दिन तक होता तो उनको 1250 रुपीज़ उनके अकाउंट में मिलता। जो उनका प्रीमियम है, प्रीमियम अमाउंट इज़ 354 रुपीज़। दोनों टेम्परेचर, दोनों थ्रेशोल्ड अगर ट्रिगर हो जाते तो उनको 2000 रुपीज़ मिलेगा। लास्ट ईयर द टेम्परेचर, लोअर लेवल टेम्परेचर वॉज ट्रिगर्ड ऑन 22nd and 23rd May. As these women travel to different areas of the city to sell their handicrafts, Ahmedabad has come up with a newer approach to beat the heat. तो अभी जो हम देख रहे हैं जो चालू फुल बस स्टॉप है उसमें हमने हाई प्रेशर मिस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। तो ये कूलिंग टेक्नोलॉजी से जो लोग ये बस स्टॉप में वेटिंग एरिया में या बैठते हैं तो उनको मिनिमम 4 से 60 डिग्री तक का लोअर टेम्परेचर फील होता है। मतलब बाहर 45 डिग्री है तो यहाँ पर वो 38-39 डिग्री फील करेंगे। डेली सुबह 11:30 बजे वो अपने आप ऑन हो जाती है। एवरी 15 मिनट के बाद वो 10 मिनट पॉज होती है, तो वो 11:30 से लेकर 5:30 तक ये सिस्टम काम करती है। Even in the past, Ahmedabad used thoughtful architectural design to stay resilient in the face of rising temperatures. In the walled city of Ahmedabad, one will notice several por, which basically means an entrance in Sanskrit. These densely packed housing clusters, like Dharnipur, feature narrow shaded lanes and central courtyards for natural light and ventilation. Their architectural design and planning reflect a strong sense of community and adaptation to the local climate. Haveli, as you understand, it's located in Dhalni Pole, which is a heritage area or part of the old city in Ahmedabad. It has a higher ceiling. It has multiple windows placed in different locations in the Haveli. તો પહેલેથી પોળમાં જ રહેલી છું, એટલે કેવું છે કે પોળમાં ગરમી ઓછી લાગે કારણ કે બધા મકાનો પાસે પાસે છે, આજુબાજુમાં જ મકાનો હોય ને એટલે ઘર તપે નહીં. Lakes such as Kankaria, Vastrapur and Chandola, along with the Sabarmati river, are some of the only major blue spaces left in the mega city. By sunset, people throng to the riverfront
to find relief from the day's sweltering heat. 5 વાગ્યા સુધી સીવું છે અને પછી આ રસોઈનું કામ હોય તો રસોઈ કરવું, પછી છોકરાઓને આવી રીતના રિવરફ્રન્ટ ફરવા પાછી લઈને આવવું. ઘર મેં તો બફારો જ આમ ગરમી જેટલી લાગે છે ને આખો દિવસ ઘરમાં, તો આમ પંખાની હવા પણ નહીં લાગતી જરાય. આમ ચાલુ રાખી 24 કલાક પંખો ચાલુ હોય તો એ ગરમી એટલી લાગે છે ઘરમાં. તો ના નહીં, અમારે તો આમ ગીચ વિસ્તાર છે એટલે. ये महीने में कितनी बार जाते हो? महीने में नहीं जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, जैसे कोई त्योहार पड़ गया है तो बच्चों को लेके जाते हैं. बाकी ऐसे संडे वनडे तो एंजॉय करने को नहीं मिलता है, पैसा उतना खर्चा होता है ना.